नमस्कार, मैं एडवोकेट अभिषेक रंजन सिंह। इस सीरीज में आज हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो चौथा केस लेके आया हूँ और आशा करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही होगी। यू मस्ट बी enjoying all this and will be able to better comprehend how the disability is calculated, what are the reason when it is not granted। जब हम पूरा एक कवर कर लेंगे सेगमेंट डिसेबिलिटी का, डिसेबिलिटी पेंशन का, तो आपको पता चलेगा कि मिलिट्री ज्यूरिस्प्रूडेंस में कितनी बारीक चीजों पे ध्यान रखकर फिर ग्रांट किया जाता है। आज मैं जो केस लाया हूं वो है K.J.S बुटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और बहुत बारीक चीजों को आप ध्यान रखते हैं। यू हैव टू मेक श्योर दैट द निटिग्रिटीज ऑफ द लॉज एंड यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस जब जजमेंट आता है तो। एंड K.J.S बुटर को मैंने क्यों सेलेक्ट किया इस लिस्ट में, उसका एक कारण है और उस कारण को हम जानेंगे। जैसे मैंने कहा था, कुछ कीवर्ड्स आएंगे। डिसेबिलिटी पेंशन, अगेन उसमें दो चीजें होती हैं, एक सर्विस एलिमेंट होता है, एक डिसेबिलिटी एलिमेंट होता है। और आगे बढ़े, जैसे इस केस में हम आएंगे तो वॉर पेंशन, जो वॉर लाइक सिचुएशन या वॉर इंजरी जो होती है वो इस केस में आएगा। ब्रॉडबैंडिंग लास्ट केस में हमने देखा था, एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आया था विच गेव दिस ब्रॉडबैंडिंग टीथ, जो 2001 में आया था, उसके बारे में हम जानेंगे। इनवैलिडेटेड आउट ऑफ सर्विस, डिस्चार्ज ऑन मेडिकल ग्राउंड्स बिकॉज ऑफ सर्विस कनेक्टेड डिसेबिलिटी, attributable to non attributable to and aggravated by, ये चीज अब आपको क्लियर होगी। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा कैटेगरी ई, पैरा 4(1) का, द कैटेगरी ऑफ पेंशनरी अवार्ड कवरिंग डेथ और डिसेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम अ वॉर लाइक सिचुएशन, इंक्लूडिंग EF subsection 2 battle involution training exercise and demonstration with live ammunition। liberalization versus new benefit, the distinction liberalization और new जो benefit आएगा उसमें differentiation होगा and there creates a class within a class। now जो short service commission officers हैं उनके बारे में यहाँ पे आएगा। अब हम इस केस को करते हैं। मैंने इसमें एक चेंजेस ये कोशिश की लाने की, जो आर्गुमेंट्स पेटिशनर दे दिए थे, जो आर्गुमेंट्स डिफेंडेंट्स ने दिए थे, जो जजमेंट, इसको मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा ताकि क्लैरिटी और आ जाए कि किस बेसिस पे फाइनल डिसीजन आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। K.J.S बुटर का जो केस है उसमें क्या था कि he joined Indian Army in 1969 as a short service commission officer, but he was wounded in an exercise जहां पे उनके लेफ्ट हैंड में चोट लग गई। और जब एक्सरसाइज में उनको चोट लगी तो ऑब्वियसली एक लो मेडिकल कैटेगरी में उनको डाल दिया गया एंड ही वाज बोर्डेड आउट, ही वाज इनवैलिडेटेड आउट। उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट डाली जिसमें वॉर इंजरी पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1996 मांगा गया ऑन द बेसिस ऑफ लेटर which was given in the year 2001, 31st January 2001, treatment of its disability at 75% and grant of service element of full 10 year instead of 2 years and revision of rates of disability with effect for 1996। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ हुआ क्या। जब वो लेटर आउट हुआ 2001 में, तो K.J.S बुटर साहब ने जो डाला कि मैंने तो 10 साल की नौकरी की और मेरा जो सर्विस कंपोनेंट है वो सिर्फ 2 साल कैलकुलेट किया गया, जो कि गलत है। और जो वॉर एलिमेंट है उसके जो एरियर्स हैं वो 96 से शुरू की जाए जो सबको मिल रहा है। तो ये तो बहुत वाजिब सा सवाल था कि भाई मुझे भी बराबरी में रखा जाए उसके। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है। जो K.J.S बुटर आए, उन्होंने बोला इस चीज को कि मेरे साथ गलत हो रहा है और ये जो चारों पांचों चीजें उनकी मांग रखी कि 50% को 75% कर दिया जाए, जो मेरा वॉर एलिमेंट जो डिसेबिलिटी पेंशन का है उसको 1996 से लिया जाए जो 2001 के नोटिफिकेशन के हिसाब से, बट ये मना कर दिया गया। और उन्होंने अपना केस किया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, वहां पे डिनाई कर दिया गया और ये सुप्रीम कोर्ट में आए। नाउ द आर्गुमेंट्स गिवन बाय K.J.S बुटर वाज द इंस्ट्रक्शंस डेटेड 31st January 2001 read with the subsequent instruction dated 16 May 2001 make the revised broad-banded benefits available even to those invalidated or retired prior to January 1, 1996. The benefits were merely liberalization of the existing pension। तो हुआ क्या कि जो लिबरलाइजेशन हो रहा था, पहले जो प्रोविजंस थे उनका 2001 में, ना कि एक पूरा नया स्कीम था।
तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था. लास्ट लिबरलाइजेशन वाज आई थिंक इन 1987. तो उसके बाद उसी स्कीम को 2001 में कहा गया, बट गवर्नमेंट का कहना था ये बिल्कुल नया है, which was wrong. Now what he said is that my disability should be calculated at 75% instead of 50%. It should be raised. And in 1989, in 1979, when he was granted the disability pension, the only 2 years of his service was calculated instead of 10 years of the service, which was again wrong done to him. तो service element, तो service component है वो कम कर दिया गया था वहां पे. Now, what the respondents or the Union of India said, the instruction dated 31st January 2001 were applicable only to person who retired on or after 1st January 1996. So, therefore, having invalidated, released in 1979, he falls outside of it. तो इसमें बहुत क्लियर कर दिया यूनियन ऑफ इंडिया ने, बिकॉज ही वाज इनवैलिडेटेड इन 1979. नोटिफिकेशन जो कहता है कि ओनली 1996 के बाद जो होगा वही इंक्लूड होंगे, तो ही इज नॉट इंक्लूडेड. The benefit of enhancement of 75% only to officers invalidated out of service after 1996. The appellant was invalidated long before that. तो point number 2 इसलिए उनको हटा दिया गया. उसके बाद बोला in any event appellant had retired on completion of his 10 years of completion of service and had not been invalidated out of service and was therefore not entitled to the disability pension linked benefits. Now इसमें तीन चीज हमने देखी थी कि when you have a disability, the invalidated out, the second one is the completion of the tenure or superannuation. In that case it will be treated as equal. तो वहां पे यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो तर्क रखा वो कहीं नहीं कि प्रीवियस आप देख रहे होंगे रामावतार वाले केस से डिफरेंट रखा. नाउ इसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आई. वन वाज द लेटर ऑफ 31st January 2001. Then it was again rationalization of the pension rules 1996, and the letter dated 87 war injury का जो letter था 87, that is again important. और regulation of the pension 53(1) इसमें important है. Now the judgment, and the judgment says the cut. अब इसमें जो respondents और जो defendants की side सुन लिया, तो the judgment was as like this. The cutoff restriction is unconstitutional. अब judgment क्या कहता है ना, I'll read it line by line. Restricting the benefit to officers invalidated, retired after 1st January 1996 is violative of Article 14 and hence illegal. The Ministry of Defense letter dated 31st January 2001 is only a liberalization of an existing scheme and must therefore be applied equally to all pensioners and irrespective of whether they retire before or after the date. So that आपने जो distinction create किया because of that letter, that is unconstitutional. Broad banding. Now what it says, under para 7.2 of letter dated 31st January 2001 instruction, a disability assessed between 50 to 75% is to be treated at 75%, and it makes no difference whether the officer was invalidated before or after 1st January 1996. The appellant's disability was accordingly commuted at 75%. War injury pension granted from 1st January 1996. The appellant's injury of gunshot wound sustained during an exercise with live ammunition fell within the category 1 subsection F subsection 2 of para 4.1. 4.1 entitled him to war injury pension, service element plus war injury element under para 10.1, read with the notification of 16th May 2001 rationalization extending the benefit to 1996 retirees. Now the other one is full tenure service जो short sherbet commission officers का लिया जाएगा, that would be 10 years following a judgment by the name of Union of India versus C.S. Sindhu. The appellant's entire 10 years of short service must be reckoned for pension and not the 2 years with arrears of 8% interest. Retired, invalidated out, rejection, distinction rejected. Again, as I said, invalidated out, retired, superannuation, completion of tenure, all will be considered equal when it's come to disability pension. Now, this judgments is very important for the short service commission officers because it makes a clear distinction कि when you are invalidated out because of the disability, आपके क्या प्रावधान होंगे. Now,
It is an evolving concept, this disability pension ka. It depends on the case to case basis, as I have said regularly. So in this, it was made sure that the army personnel or the defense personnel get their due right. They serve the nation, they serve the motherland in their prime. So it is our, we are duty bound to give them their rightful due, rightful monetary compensation, what we can do, whatever we can do. And Supreme Court बहुत lenient view लेता है इन सब चीजों में, and he was granted relief. And the arguments presented by the Supreme Court of India, the arguments presented by the Union of India was outrightly rejected. So K.J.S. Buttar is very important, because it set the tone for the short service commission officers, made it clear that any artificial barrier of date will be of no use when it comes to disability pension. Like a letter was released in 2001 stating that 1996 will be the cutoff, but that was unconstitutional. So I hope you are liking this, and I'll come with the next video, the case number 5, very soon. Jai Hind.